Hello friends, today we will see some more daily use sentences. So we will see the first example. So first example is what? What time is it? So someone is asking you what time is it? So in ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. हिंदी में हम क्या कहते हैं? अभी कितने बजे है? अभी कितने बजे है? बजे बजे यहाँ पर हम कह सकते हैं, नहीं तो हम कह सकते हैं अभी क्या समय हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. ठीक है. తెలుగులో ఇప్పుడు సమయం ఎంత? ఇప్పుడు సమయం ఎంత తెలుగులో మేము ఇలా చెప్తాం. సో in English we will tell time, in Kannada we will tell gante, in Hindi we will tell baje, nahi to samay. In Telugu we will tell what? Samayam. Next example, can I help you? Can I help you? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? सहाय माड़ಬಹುದೇ. हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? తెలుగులో నేను మీకు సహాయం చేయనా? సహాయం చేయనా. See guys, here help the word what you will see here, help in Kannada help word is सहाय. हिंदी में मदद, तेलुगुलो सहायम. We will move to the next example. So that is I am sorry. I am sorry. In Kannada ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. So here ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, instead of this ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. हिंदी में मुझे माफ करो. తెలుగులో నన్ను క్షమించండి. Now you will compare the words in English. Sorry in Kannada kshamisi, Hindi में maaf, Telugu kshaminchandi. So you will compare the 4 different words in 4 different languages. Next example, where do you live? So where do you live? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ. हिंदी में आप कहाँ रहते हैं? తెలుగులో మీరు ఎక్కడ ఉంటారు. So now you will see the word difference live. In English what live? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋದು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ. हिंदी में रहते, रहते नहीं तो रहना. In Telugu ఉంటారు, ఉంటారు. So live, వాసిసుత్ತೀరి, रहते, ఉంటారు. Okay. So next example, I need help. I need help. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. हिंदी में मुझे मदद चाहिए. In Telugu నాకు సహాయం కావాలి. So you will find the common word, that is what? Help.
In English help, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ. In Hindi ಮದದ್, ತೆಲುಗುలో సహాయం. Next one, how much is this? So some person is asking the price for a particular product. How much price is this? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ತರ ಆದರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿ ಮೇ यहाँ कीमत, यहाँ कितना है. नहीं तो हम ऐसा भी पूछ सकते हैं इसका कीमत क्या है. ठीक है. तेलुगुलो इदी अंत. How much is this? How much is this? इदु ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ. हिंदी में यहाँ कितना है, नहीं तो इसका कीमत क्या है. तेलुगु इदी अंत. Next example, what are you doing? What are you doing? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. हिंदी में आप क्या कर रहे हैं. In Telugu మీరు ఏమి చేస్తున్నారు. So doing in English doing, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. हिंदी में कर रहे, करना, कर रहे. తెలుగులో చేస్తున్నారు, చేస్తున్నారు, చేయడం in తెలుగు. Next one, I'm feeling tired. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. हिंदी में मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. తెలుగులో నేను అలసిపోయాను, అలసిపోయాను. So in this example we will see the word that is what? Tired. In English tired, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸುಸ್ತಾಗುವುದು. हिंदी में थकना, थका हूँ, थकना. తెలుగులో అలసిపోయాను, అలసిపోయాను. అలసిపోయాను means what? Next last example, have a nice day. Have a nice day. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ. हिंदी में आपका दिन शुभ हो. తెలుగులో మీ రోజు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యూ కెన్ సీ, తెలుగులో మీరు చూడొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం పెద్దదైంది. మీ రోజు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నైస్ డే, दिन సుఖకరాగలి. हिंदी में शुभ दिन. తెలుగులో మంచిగా, మీ రోజు మంచిగా, మీ రోజు మంచిగా. Okay, so this is what we will find some common sentences, and we will see in the next class with some more examples. Okay, thank you, have a nice day.